Hello, hello, hello. हेलो। हाँ, हेलो Bilal. सर, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. This is the second जी सर, concept. अस्सलाम वालेकुम। Second concept of this sequence and series. जी सर। Then the name of this one is, what is this? D. डी Alembert, अल्बर्ट रेशियो टेस्ट। or simply we can call it as ratio test. So here you see the statement, very simple statement. If summation un is a series of जी सर। positive terms, what is the summation un? What we are going to call it as? It's a series of positive terms means nth term है ना जी. Summation un means what? Hello, hello. समेशन ऑफ यूएन। Is it what summation un means? Nth हमारी। term of the given series. Yes. Right? हेलो। Hello, I can hear you. No problem. Summation un is a series of positive terms such that limit n tends to infinity un by un plus 1 is equal to L. Then the case 1 here, summation un is said to be convergent if L value is greater than 1. And if the same value is less than 1, then we say un, that means the nth term is divergent. And we are going to say the test fails to decide the nature of the series if L is equals to 1. ये आपके तीन डिफरेंट सिचुएशंस है, उसके ऊपर आपका डी एलिमेंट रेशियो है। और आप एग्जाम में अभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें आपको ये मेंशन नहीं करेंगे कि आपको ये रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना है, या डी एलिमेंट रेशियो से करना है, या इंटीग्रल टेस्ट से करना है, या कॉची रूट टेस्ट से करना है, या लॉगरिदमिक टेस्ट से करना है, या फंक्शन टेस्ट से करना है, मेंशन जी। नहीं करेंगे। तो आपको कैसा पूछा नहीं है, आपको कैसा पता चलेगा कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, आपको याद रखिए। सपोज whatever the जी सर। question is given, as an example this question is given जी 6.3.6.9 and 3n 3n plus 1. So this type of question, any question, we can start our work by default with the ratio test only. हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अपन डिफॉल्ट रेशियो टेस्ट से ही शुरू करना। बाद में कुछ डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि रेशियो टेस्ट से सॉल्व नहीं हो रहा, दैट क्वेश्चन विल बी अगेन कन्वर्टेड टू limit comparison test and we can solve it. And you know what is limit comparison test? Un is given, from un we are choosing vn, and we are applying limit n test to infinity un by vn. If we are approaching to a finite value, then depending upon vn, using the p-test, we can say vn is convergent or divergent. Since their behaviors are same, depending upon vn divergent, un convergent, vn convergent, ऐसा बोल सकते हैं. Okay, so the default work is what? We have to start our solution with the tell me, with the ratio test only. अब आप एक it's a new concept. अच्छा देख ओके। लीजिए, first problem I am going to solve it. This is the first problem I am solving now. So solution of number one, question number one. Solution of question number one. So can you tell me what is the un value, the nth term? The nth term is the nth term is, बोलिए क्या है? un is equal to, come on, 3 into 6 यू and एन so टर्म्स on, 3n यू थ्री। divided by 4. यही है ना nth टर्म? समेशन वैल्यू मतलब क्या है? un जी values सर। ना. This is 3n plus 1. It is nth 3n टर्म। plus 1. Yes, nth term. यूएन वैल्यू nth टर्म है। un का मतलब nth term है ना, 5 to the power of n
by 3n plus 2, Yes, sir. राइट। अब इसमें से देखिए अपने को क्या करना है स्टेप वाइज। देखिए यहाँ पे ना वीएन वैल्यू चूज करना नहीं है, अपने को क्या करना है, यूएन तो आ गया, यूएन मीन समीशन यूएन वैल्यू वी गॉट इट। नाउ यूएन प्लस 1 वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन अप्लाई द लिमिट। तो क्या करेंगे सेकंड स्टेप में यूएन प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट यूएन प्लस 1 फ्रॉम यूएन। अब उसका हिंट हिंट देख लीजिए, अगर आपके पास सीरीज है तो नेक्स्ट टर्म यूएन प्लस 1 कैसा लिखते हैं, nth टर्म है तो फिर यूएन प्लस 1 कैसा लिखते हैं, दो केसेस है। So UN value is 3 into Yes, sir. 6 into 9 and so on. 3n. Okay. 3n up to 3n we have in our question. अब आप रफ कॉलम में देखिए UN plus 1 कैसा फाइंड आउट करते हैं। I will give you the hint. What we have to do it here is 3n है ना, ये term, this term. In this term, wherever n is there, we are going to put n plus 1. Yes, sir. So what is the answer? What is the answer? 3n plus 3. So the immediate next term will be, इसका जो नेक्स्ट टर्म होता है यूएन प्लस 1 टर्म वो है 3n प्लस 3। क्लियर है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 4 into 7 into 10 and so on, 3n plus 1 up to here it is there in our question, but we are going to write un plus 1 value. So that work I am doing in our rough column. There is the rough column here. Sir, आप जी बोलिए, बोलो बाबा, कुछ डाउट है। Wherever n is there, we are replacing with n plus 1. So finally, our answer is 3n plus 3 1s are 3 plus 1 is 4. वीडियो अटक गया था जी जी, सर। ओके ना, ओके अभी ओके है, नहीं इट्स ओके ना, हम्म हम्म राइट। जी सर, इट्स ओके। Into here you see what I am going to do, 5 as it is, जहां भी n है वहां पे क्या रखना है आपको, n plus 1 divided by 3 times, इसको भी रफ कॉलम में करके बता देता हूं आपको। Look at here, this is the rough work. 3 here in place of this n we are replacing with n plus 1 plus 2. What will be the answer? It is 3n. 3 1s are 3 plus 2 is 5. 3n plus 5. तो ये होगा आपके पास, this becomes 3n plus 5. तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सिचुएशंस आ रहे हैं, अच्छा देख लीजिए, ये रिकॉर्डिंग को बाद में भी फिर से आप सुनिए, आपको पता चल जाता मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए, इफ इट इज ए सीरीज फॉर्मेट, if it is a series format, what I am doing after this step, immediate next term I am writing. How I am writing, I gave the rough column idea. Here also up to here it is there, it's the next n plus 1 term is this one. How I am giving the idea here, but it is a separate term. इसमें 5n लिख के फिर 5n plus 1 नहीं लिख रहे, जहाँ n है वहीं n plus 1 रिप्लेस कर रहे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर nth टर्म है, ये भी nth टर्म है बट सीरीज फॉर्म में है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आवर क्वेश्चन इज देयर। क्लियर, समझ में आया? हेलो यस, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो समझ में आया? ओके, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ un by un plus 1. Any doubt in this step? Hello, what happened? नो सर। Up to here any doubt? जी सर, डाउट नहीं है सर। जी, मैं यहाँ पे एक बार फिर से नो सर। ये पॉइंट फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बाद में आया तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। कैसा है देखिए, अप टू हियर इट्स वन टर्म, यहाँ पे भी एक अलग टर्म है, दिस इज द सीरीज फॉर्म, दैट इज व्हाई wherever n is there we are replacing with n plus 1 and immediate next term
अगर क्वेश्चन सीरीज में है तो इमीडिएट नेक्स्ट टर्म n+1 टर्म होता। अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक ही nth टर्म है तो जहां भी n है वहां n+1 रिप्लेस कर देना बस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, बाद में रिकॉर्डिंग में सुनिए ये पॉइंट, मैं आगे फिर बोलूंगा। un+1 वैल्यू, लेट मी फाइंड आउट un+1 वैल्यू। तो un क्या है भाई, 3 into 6 into 9 and so on, 3n divided by 4 into 7 into 10 and so on, 3n+1. This is un value, and the un+1 value, since it is a fraction by fraction, we are going to write the second fraction in the numerator. It is like that. This is 3n+1. This is 3n+1 into 3n+2. अच्छा, एक सॉरी, यहाँ पे अपन एक टर्म लिखना भूल गए, इसके साथ में 5 वाला भी टर्म है। I forget that. Let me write. इसके साथ ये भी टर्म है ना यहाँ पे, 5 to the power of n divided by 3n+2. This is also there na in our un value. It is completely up to here na. This is multiplied by 4 into 7 into 10 and so हाँ on, सर 3n+1 into 3n+4, 3n+4. Okay, so since we are writing its reciprocal, so this 3n+5 will also go to the numerator, divided by this is 3 into 6 into 9 एंड सो ऑन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको बाद में भी कुछ और डाउट आ रहा तो ये पीडीएफ जो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ उसमें वो पॉइंट को हाईलाइट करके बाद में भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, खाली उतना पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नाउ 5 to the power of n+1, आई वांट टू राइट लाइक दिस, 5 power n into 5 power 1। लिख सकते हैं ऐसा? जी सर, समझ में आ रहा यस, ओके। तो देन है ना? what I am going to do, I am cancelling from terms. हाँ But हाँ 3 into 6 into 9 up to 3n, 3 into 6 into ठीक 9 है up to सर। 3n cancel, 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1, 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1 cancel, 5 power n here, 5 power n cancel here. So then after that हाँ remaining values, whatever left off, let me write un by un plus 1, un by un plus 1. It is equal to, देखिए अभी whatever left off, we should write it. न्यूमरेटर में क्या बच गया होगा, 3n+4, ये तो पूरे टर्म्स कैंसिल हो गए ना, 3n+4, 3n+4 is left here in the numerator. Moreover, this value also left over in our numerator. 3n+5 जी भी बच गया। Denominator is 3n+2 left, 3n+2 left, and here what, 3n+3 left, 3n+3 left, और वहां पे एक 5 भी बच गया, बट मैं अगर और क्लियर लिखा दो 1/5 भी बच गया। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट सर। Okay. See, un by un plus 1 value is नो over. डाउट सर। Now, हेलो। now apply limit n tends to infinity on both sides. ठीक है, तो taking limit n tends to infinity on both sides. Taking limit n tends to infinity on both sides. So this is equal to, when I am taking limit n tends to infinity, it is becomes limit n tends to infinite un by un plus 1 value. It is equal to, तो जो भी टर्म बच गया ना, once again I am writing, that is limit n tends to infinite 3n plus 4
3n + 4 वो जो न्यूमरेटर पे बच गया उसको सिर्फ मैं यहाँ बता सकता हूँ एक बार आपको फिर से ये वैल्यू 3n + 4 3n + 5 को मैं सिर्फ लिमिट अप्लाई करके लिखूँ 3n + 5 3n + 5 divided by 3n + 2 into 3n + 3, and this is 1/5. 1/5 is a constant. Better to write down outside. 1/5 is a constant. Any doubt? Any doubt? Hello, Bilal. You should give me the answer after each and every step because these are the online classes. I don't know whether you are there in the class or not. That's what after each and every step I'm asking. Limit n tends to infinite. Hello? 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 हेलो सर। जी सर। सर वो Yes. मेरा नेट चले गया था सर। Yeah, काफी मिस कर दिया मैं। आवाज नहीं आ रही थी। okay, I'll go for some steps here. Any step up to here? Any doubt? सर थोड़ा नीचे जाइए। See, we are just taking limit n tends to infinity on both sides, and जी सर। 1/5 is a constant. We are going to pull it out. ठीक है ना? ठीक है. Take n common. जी सर। We are left with 3 + 4/n now. If I am taking n common, right? n common लेने का मतलब n से divide करें ना. It is becomes 3 plus. Give me the answer. 3 + 5/n. N common means it is becomes n square here. Denominator is once again n common. It is 3 + 2/n. It is becomes n square here. Since we are taking here also n common, 3 + 3/n. Any doubt? Any doubt? नो सर। This n square with this n square cancelling out. And now after this step we have to apply the limit. Apply limit. If we apply the limit, we are getting 1/5 into C. How many terms become 0 if I am applying the limit? Tell me. ये 0 होता? This is 0 now. Tell me. This is 0. This is 0. जी सर। This is 0. This is 0. These are the values which is इस become 0. हाँ Then what जीरो is बन left जाते of? सर। Finally, what is left of? 3. लेफ्ट ऑफ इज 3 3 into 3. Okay, let me write it clearly. डिवाइडेड बाय 3 into 3 Yes, 3 into 3. तो 9 There by are 9 also 1 3 सर। left. Yes. Again 3 here. Again 3 here. So all the 3s are cancelled. What is left of? ये तो cancel हो जाएगा. We are left with 1/5. 1/5 क्या है बेटा? Less than 1 है या greater than 1 है? It is less than 1 ना? 1/5 लेस देन 1 है सर। Less than 1. तो less than 1 है तो क्या बोलते हैं आप सीरीज को? देखिए स्टेटमेंट देखिए एक बार. If un is convergent, if L is less than greater than 1, un is divergent. Divergent if L is less than 1. अपने को क्या है आंसर? Less than 1 आया ना? जी सर। क्या बोलेंगे? Therefore देयरफॉर un is divergent. therefore your un is I want divergent. to get totally un divergent. That's it. That's it. Right? कुछ भी बंद मत करिए switches. मैं करता हूँ. Okay. Any doubt in this problem?
No doubt, sir. Which problem we did? Question number 1 we did. Okay. Question Yes. number 1 in this D-Alembert ratio test. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार D-Alembert ratio test का स्टेटमेंट फिर से पढ़ दे रहा हूँ. एक बार आप देख लीजिए. Summation UN is a series of positive terms such that यहाँ पे अपने पास दो सीरीज नहीं है बाबा. UN VN नहीं है जो पहले अपने पास रेशियो टेस्ट में था, वैसा नहीं है. यहाँ पे क्या है? We have only UN. UN means the nth term of the given series, which is given in our question. Sometimes what we have to do from the given series, we have to find out the nth term. So after getting nth term, if your nth term in a series form, then we should write immediate next term is UN plus 1th term. और अगर UN आपके पास nth term में है, पहले से ही nth term है, तो खाली जहां भी n है वहां n+1 रिप्लेस करे तो UN+1 आ जाता. Then we can calculate the value of UN by UN+1, and then we apply the limit n tends to infinity on both sides. If suppose your answer is whatever the answer is there, if you are getting greater than 1, then we say it is convergent. If it is less than 1, then we say it is divergent. If suppose your answer is 1, we are unable to decide the nature of the given series, we have to apply another test. That time, depending upon the situation, you can apply limit comparison test, or you can apply P series test, or you can apply Rabi test, or you can apply logarithmic test, or you can apply nth root test. ये कब होता जब L की वैल्यू इक्वल टू 1 आती. वो कब सिचुएशन अराइज होता? क्वेश्चन में अगर वेरिएबल आ गया फंक्शन में, जैसा कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में x पावर n आ रहा, तो मतलब वी आर अनेबल टू डिसाइड द नेचर होता है. L इज इक्वल टू 1 आ गया, डिपेंडिंग कोई एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. जैसा कि ये क्वेश्चन अपना कोई भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है. लेस देन 1 आ गया, खत्म, बात खत्म, डाइवर्जेंट. ग्रेटर देन आ गया, कन्वर्जेंट, खत्म. बट अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही, सपोज एक सारी, अब क्या बोल सकते हैं आप? कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इसको? नहीं बोल सकते. We can't say that it is convergent, we can't say that it is divergent, so we have to apply जी another सर. test and we clarify our doubt. वो सिचुएशन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह. ओके सर. ठीक है. जी सर. जी. तो नेक्स्ट अपना जो सेशन रहेगा वो शाम में 7:30. आर यू फ्री? 7:30. 7:30 यस सर. मगर मैं एक बार डॉक्टर के पास जाता हूँ. 8 o'clock ले सकते हैं क्या सर? वही आपसे पूछ रहा हूँ कंफर्मेशन टाइम. 7:30 रखेंगे, 8 रखेंगे? ओके 8 रखेंगे. 8 रखेंगे सर. 8 रखेंगे. आप एक कंफर्म मेरे को बोल दीजिए. बहुत चेंजेस करना हो तो मेरे को क्या है, और भी क्लासेस रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. सर और लेट ले सकते हैं क्या आप क्लास? लेट बोल तो बहुत लेट हो जाता है. 8:30 रख सकते हैं मैक्सिमम. सही रहता सर 8:30. ठीक है, 8:30 रख देंगे. जी सर. 8:30 फाइनल सर. 8:30 we can. 8:30 right. ओके सर. ठीक है. This is अल्लाह okay ना? Any doubt in this now? नो सर. नो डाउट्स. मैं पूरे ये क्वेश्चंस एक और बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ सर. आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिए. हाँ भेज रहा हूँ.